अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। आइए चलते हैं यहाँ और मिलते हैं साहित्य के प्रेमियों से। साहित्य में और साहित्य के बिना और साहित्य से जो जीवन है वो साहित्य के बिना नहीं है, और जीवन साहित्य से ही है, और जीवन साहित्य में ही है। तो अगर साहित्य से हम कटे रहें तो जीवन नहीं है। इसे साहित्य से जितना जुड़ेंगे व्यक्तित्व का उतना ही निखार होगा, उतना ही आपकी जो सोच है, आपके जो विचार की जो स्त्राव है वो उतना ही सूक्ष्म रूप से होगा। इससे साहित्य से जुड़ना जरूरी है, और मैं साहित्य से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। हालांकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, फिजिक्स का, और बचपन से ही चूंकि कविता पाठ करना और कहानियाँ पढ़ना, और जब नाटक से मैं जुड़ा तो पूरा साहित्यिक ही हो गया, क्योंकि नाटक और साहित्य वही है। साहित्य को प्रस्तुत करने का माध्यम है नाटक। तो मैं आजकल भारतवर्ष के हर जगह नाट्योत्सव हो, सिनेमा उत्सव हो या साहित्य उत्सव हो, मैं जाता हूँ। तो उसी क्रम में मैं अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में आया हूँ। बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम लग रहा है। 24, 25, 26, आज 24 तारीख है। दिन में उद्घाटन हुआ, मैं उद्घाटन सत्र में था, और फिर उसके बाद मेरा एक अपना सत्र था जो किया गया। बहुत ही अद्भुत रहा। और यहाँ का जो एम्बियंस है, जो वातावरण मैं अभी देख रहा हूँ, रात के 9 बजने जा रहे हैं, और जो उत्साह, जो ऊर्जा, जो उमंग और तरंग और जोश खरोश दिख रहे हैं लोगों में, सिर्फ ये नहीं कि आप जैसे यंगस्टर में ही दिख रहे हैं, जो युवा और युवती हैं, वो तो बहुत सारे कॉलेजेस से आए हुए हैं लोग, लेकिन जो हमारे उम्र के और हमसे भी बड़े जो हैं वो भी उसी उत्साह से जुड़े हुए हैं। एक से एक साहित्यकार आए हुए हैं। अभी अभी गुजराती कवि सम्मेलन खत्म हुआ, इतना अद्भुत कवि सम्मेलन था, जबकि मैं गुजराती उतना नहीं समझता हूँ, फिर भी मुझे समझ में बातें आ रही थी। तो एक ये माहौल है और ये सारी चीजें नई पीढ़ी को यही तो हम देकर जाएंगे। पहली पीढ़ी जो है नई पीढ़ी को देती है, तो नई पीढ़ी को हम लोग दे रहे हैं। नई पीढ़ी का संवर्धन हो रहा है, नई पीढ़ी का पोषण हो रहा है साहित्य को लेके। साहित्य ही समाज को पोषित करता है, साहित्य ही समाज को संवर्धित करता है। तो वही कार्य हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। हमारे उमा शंकर जी जो हैं, उमा शंकर यादव जी जो इसके आयोजक हैं, उनकी पूरी टीम अद्भुत टीम है। मतलब मैं इतने सारे युवा युवतियों से मिला जो काम कर रहे हैं, अद्भुत एनर्जी है, अद्भुत उत्साह है। मेरी एक पुस्तक आई है अखिलामृतम, हिंदी में है, कविता संग्रह है, 25 कविताओं का संकलन है, और एक अलग ढंग की कविता की किताब है ये। इस तरह की कविताएं आजकल बहुत कम लिखी जाती हैं। अध्यात्म है, दर्शन है, जीवन है, पर्यावरण है, सृष्टि है, ब्रह्म है, बहुत सारे विषयों पे मैंने कविता लिखने का प्रयास किया है। और सारी कविताएं, जो 25 कविताओं का संग्रह है, सारी कविताएं हमने ब्रह्म मुहूर्त में लिखी है। अब ये संयोग कहिए या योग कहिए या उनका आशीर्वाद कहिए, उन्होंने ही लिखवाया है। मेरा जो भी काम होता है भोले बाबा करते हैं। मैं दिखता हूँ, मुझे लोगों को लगता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, वो भोले बाबा करते हैं। तो भोले बाबा ने करवाया है, तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उसकी उत्पत्ति हुई है, उसकी लेखनी हुई है, और अभी पुस्तक का स्वरूप ले लिया। पुस्तक का नाम है अखिलामृतम, अमेजोन पे उपलब्ध है, बहुत चर्चित है, लोगों ने बहुत पसंद किया है कविताओं को, और जो भी पढ़ना चाहे अमेजोन से मंगा सकता है। देखिए, हम 2016 में स्टार्ट किया था हमने इस प्रोग्राम को, और हम हमेशा इसको बड़ा करने का ही विज़न लेके आए हैं, और हर साल इसको हमने बड़ा करने की कोशिश किया है, और ईश्वर की कृपा से बड़ा होता गया है। एंड दिस टाइम यू कैन सी द क्राउड एंड यू कैन सी द वाइब्रेंसी हियर. The ballet, which is just about to start, has a full packed audience presence, and it has become truly international. If you see the crowd, if you see the audience, you'll find different color, creed, caste, religion, nationalities of people are available here, and I find it's a kind of dream come true. I wanted that this people should be standing even, and it is happening. Yeah, it is see, it's not only an event for me. It's not at all event for me. It's a way of life, and I live the way. This is a part of life that every day getting up, eating food, and doing other activities. This is literature, which I take it as a part of life. We started in 2015,
Right. During that time only, I thought that something in Ahmedabad should be done because I wanted to put Ahmedabad on the global map of literature. And vision was everybody should come from outside. I'm going to Ahmedabad. I'm going to Literature Festival, and if I can be medium for that, I thought I can be proud and I can feel privileged about it. Right. So thank you so much, and yeah. ઓફિસર તો હું પછી છું, પહેલાં તો હું છેલ્લે તો માણસ જ છું ને, અને માણસની બસ એક સરસ મજાનું હૃદય હોય ને હૃદયની ઉર્મિઓ હોય એ કવિતા લખાવે. હવે વાત એવી છે કે કવિઓ વિશે એવું કહેવાય છે કે કવિઓ પેદા થતા હોય છે, જન્મતા હોય છે, એ કવિઓ બનાતી મતલબ સાહિત્યકાર બનાતું નથી હોતું. તો એવું છે કે કવિતા મળવી એ વરદાન છે. જીવનના અમુક પડાવો એવા હોય કે જ્યારે તમને કોઈ તકલીફ મળે અથવા તો ખુશી પણ મળે, પણ જીવન આપોઆપ જ આવું થઈ જાય અને એમાં પછી કવિતા આપોઆપ સ્ફૂર્તિ હોય છે. તો એટલે ઓફિસર હોવું એ પછીની મારી એક ઓળખાણ છે, એ પેલું વાંચી વાંચીને પ્રાપ્ત કરેલી છે, જ્યારે કવિતા એ મારું હૃદય છે. ઓફિસર હોવું એ થોડી મગજની બાબત છે એમ કહી શકાય. એટલે કવિતાનો ચાહત અને આપ સૌનો પ્રેમ મને અહીંયા સુધી લાવ્યો છે. થેન્ક યુ. એ તો ભવિષ્ય જ કહી શકે ને, કંઈ દેખાશે, કારણ કે હું ત્યાં રહીશ, કંઈક સમજીશ, કંઈક અનુભવીશ, પછી એ વધારે દેખાશે. આજે મેં એક શેર પણ કહ્યો, ઘણા બધા મિત્રો કહેતા હતા કે તમે અમદાવાદ જતા રહ્યા હતા, હવે અમેરિકા જતા રહ્યા, તો હવે તમારે જલસા છે, મજા છે, કોઈ ચિંતા જ નથી. તો મેં એક શેર પણ લખ્યો છે એની માટે કે બધા કહે છે તમારે તો હવે જલસા જ જલસા છે, તમે શું મારી હિંમત તો જો હું હાય પાડું છું. એટલે અમેરિકા દેશ મહાન છે, સરસ છે, પૈસા ખૂબ મળે છે, બધું જ છે, પણ એનો મતલબ એ નથી કે ત્યાં બધું જ છે. ઘણું બધું અહીંયા એવું છે જે તમે છોડીને જાઓ છો અને કશુંક પામવા માટે કશુંક છોડવું પડે છે. ઘણા બધા એ દેશ છોડેલો છે, આદિલ સાહેબ છે, મધુરાય ત્યાં છે. તો એ બધા સર્જકોએ એક માતૃભૂમિ સાથે જે લિટરેચરની કડી જોડાયેલી હતી તેનાથી વિપરીત થયા, પણ એમણે સાહિત્યને નથી છોડ્યું. સાહિત્ય તો ત્યાં રહીને પણ સર્જતા રહ્યા. એટલે મારી સાથે ત્યાં રહીને પણ સાહિત્ય રહેશે એવો મને પૂરો વિશ્વાસ છે અને હું કરી શકીશ, આ રીતે જોડાયેલું રહેશે. नमस्कार, मेरा नाम पार्थ तारपरा है. आप सबने मेरी आवाज़ सुनी ही होगी. नमस्कार. आप सबके साथ और सबके प्रयास से भारत ने 100 करोड़ कोविड टीकाकरण की बेमिसाल उपलब्धि हासिल की है. वो आवाज़ मेरी थी. और बीइंग अ पोएट, बीइंग अ लिरिसिस्ट, AILF जब जब होता है तब तब हमें इंतज़ार रहता है कि कब हम जाए और कब सबको सुने. ગુજરાતી ભાષા માટે પણ ઘણું સારું થઈ રહ્યું છે, કારણ કે ગુજરાતી કવિઓ આ એક અમારા માટે મેળાવડો છે. અમે જો કદાચ કોઈ બીજા કાર્યક્રમોમાં ના મળી શક્યા હોય તો અમને ખબર છે કે AILF થવાનો છે ને ત્યાં બધા મળવાના છે. ભુજથી લોકો આવ્યા છે, છેક રાપરથી લોકો આવ્યા છે, એટલે એક મેળાવડાનો માહોલ છે. અને આમ કહેવાય ને કે સાહિત્યિક મેળાવડો હોય ત્યાં જવાનું કોને ના ગમે. અને દર વર્ષે થઈ રહ્યું છે AILF, તો આઈ એમ સેઇંગ ઓલ ધ બેસ્ટ અને થેન્ક યુ સો મચ કે તમે આ આયોજન કરો છો, જેથી કરીને અમે લોકો મળી શકીએ અને આવનારા વર્ષોમાં હજુ આનું ફલક બહુ જ મોટું થાય. આજે તો ઘણા દેશ વિદેશથી લોકો આવ્યા છે, હજુ પણ વિશ્વભરથી દરેક લોકો આવે અને આને માણે એવી શુભેચ્છાઓ છે.